kitchen gardens are here to stay. Fresh and nutrient-rich food. The All India Kitchen Garden Association, AIKGA, is a non-governmental organization, NGO, in India that promotes the cultivation of kitchen gardens and organic farming. It aims to encourage individuals, particularly urban dwellers, to grow their own vegetables, herbs, and fruits at home, thereby promoting healthy, sustainable living. The gardening fair organized by Unit 42 of AIKGA embodied all the above practices. The stalls radiated the tremendous joy of its owners. Gardening can also be a means of economic gains for all the people involved. These are early hours. We recorded the sound bites of members new and old to give viewers a perspective of this movement called AIKGA. Please watch the video till the end. All India Kitchen Garden Association, a kitchen garden in every house. This video brings to you sound bites of some of the members of AIKGA during the Garden Festival in October 2024. मेरी तो प्रेरणा यहीं से ही सारी प्राप्त हुई है. Member of this wonderful organization called Kitchen Garden Unit 42. I would request all of you to become a member, whoever can. Vegetables like brinjal, like lobia phali, like palak, coriander, methi, everything I grow on my roof. And I have very healthy plants like mango, guava, high guava also I have, that is in pink. And I feel it really helps when you are with the plants. You feel better, you're happy. ये मेरे सारे गार्डन के हैं, ऑर्गेनिक हैं और ये देखो ये सारी मेरी गार्डन के हैं. और ये जो है ये दिख रहा है ये आपको, ये अनार के छिलके हैं, ये एप्पल के छिलके हैं, ये है चाय की पत्ती, ये है बनाना बनाना नहीं, ये है आलू के छिलके, ठीक है, नींबू के छिलके, और ये है अखरोट. ये मेरा रखने का उद्देश्य ये है कि घर घर में हम छोटी छोटी बातों से किस तरह से एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं. और ये बहुत छोटी बातें हैं कि हम घर में जो भी कचरा आता है, हम सब्जी आती है, हम उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से हम एक तो पौधों के लिए न्यूट्रिशियस है, दूसरी बात हमारा एनवायरनमेंट भी, अगर हर घर से अगर ये एनवायरनमेंट के लिए अगर कुछ अवेयरनेस लोगों में हो तो पक्का ही हमारा जो शहर है, हमारी सोसाइटी है, उसके बाद हमारा घर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा. तो हमारा ये उद्देश्य मेरा ये है कि छिलके फेंके ना और उसको हम न्यूट्रिशियस करें. उनके सारे न्यूट्रिशन हमारे पौधों में मिले. जनरली लोग क्या करते हैं, छिलके उठा के फेंक देते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन मैं छिलके पहले संभाल के रखती हूँ, फिर फ्रूट खाने बैठती हूँ. घर में भी मेरे को ये डांट पड़ती है कि तुम पहले खा तो लो, पर मेरी वो इतनी पुरानी और गलत आदत समझ लो. लेकिन मुझे लगता है कि ये घर घर में इसका अवेयरनेस होना चाहिए. और अब जैसे ये है अखरोट के छिलके, ये देखने के बाद आज मुझे लग रहा है कि मैंने इतने सारे अखरोट खा चुकी हूँ मैं पर हम उठा के फेंक देते हैं. और इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ और वो जो पोरस हमारी सॉइल है वो पोरस हो जाती है इससे. इवन ये चाय की पत्ती से भी हमारी सॉइल पोरस होती है. इन सब के पाउडर बना के अब जैसे मैंने ये बनाया है,
ये है ऑरेंज पिल का पाउडर। ऑरेंज के जो छिलके होते हैं, ऑरेंज खा लिया, छिलके फेंक देते हैं हम, तो छिलकों को मैंने ड्राई करके और इसके पाउडर बना लिया। अब ये एज अ मैं न्यूट्रिएंट भी पौधों में डाल सकती हूँ, या फिर हम फेस पैक जो बनाते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद ये है बनाना पील को ड्राई कर दिया और उसका पाउडर बना लिया। अब ये 2-2 चम्मच आप हर पौधे में डालो, पौधे भी खुश और हमारा एनवायरनमेंट भी खुश, हम दोनों एक साथ काम करते हैं इसमें। ये देखो, ये है लेमन के छिलके, नींबू के छिलके। ये नींबू है, इसके रोज़ हम देखो, नींबू तो रोज़ सभी घर में खाते हैं और छिलके उठा के फेंक देते हैं, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको ड्राई करके और उसका पाउडर में ये दोनों में यूज़ होगा। ये पौधों के लिए भी यूज़फुल है और हम अपने फेस पैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्क्रबर भी यूज़ करते हैं, एज अ स्क्रबर यू कैन यूज़। देन ये हैं प्याज के छिलके, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों के लिए। अब इसमें फंगस लगी है, फंगस हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत बेकार है, लेकिन ये फंगस पौधों के लिए बहुत ही, क्योंकि इससे माइक्रोब्यूज निर्माण होते हैं और इससे हमारी सॉइल है पोरस होती है, फर्टाइल होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें, और ये इसलिए लगाया है कि यहाँ पे जो भी मेरे मेले में जो लोग आए वो एजुकेट हो, वो भी यहाँ से कुछ सीख के जाए। सिर्फ मेले में ये नहीं हो कि हमने कुछ चीज़ें खरीद ली या पौधे खरीद लिए, लेकिन उस पौधों को किस तरह से हम उनका सेव करें, उनको अच्छे से बढ़ाएं, तो उसके लिए हमको सॉइल किस तरह से होनी चाहिए, तो ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। I'm basically a home planter. This is my first attempt. I'm doing my plant show, and these are basically all homegrown plants, matured enough. I've fixed up my roots, soil, everything. They are repotted in the pots. I have bonsais over there. I have some indoor plants repotted. Welcome to our Udyan Mela of All India Kitchen Garden Association, Unit 42. I joined Kitchen Garden Association during the time of COVID, and I'm glad I did it. I feel it really helps when you are with the plants. You feel better, you're happy, and you get so much from one single plant. You get so much, there is so much to share. And then we are eating organic, and it really is better because no fertilizers and everything. Friends here. Okay. Anything else? And I'm in the process of learning, of course, because I don't know so much. People are doing so good. They're growing all the veggies, fruits, whatnot. So I have a lot to learn. It's just the beginning. Independent house for like 18 years and not doing gardening. I had a Mali, but he was the person who was doing practically everything, and I was not doing anything myself. And then I moved to an apartment. I don't know what brought the change, and suddenly I am into gardening now. But I really wish when I had more space, I was doing it. But whatever the space I have 3 balconies, and I'm learning how to do things there, manage there. But yeah, I'm happy with the space I have. I think let me start on a small scale and then maybe I can move again. We are trying to promote our unit and All India Kitchen Garden Association through this Udyan Mela, in which we show all our homegrown, self-multiplied green plants and other plants, and also we have got vegetables in pots and fruits in pots to show how we can grow in your urban home also, how you can grow fruits and vegetables.
even in pots in your small areas. So in this way you get to learn a lot when you come over here, and if you become a member of All India Kitchen Garden Association, we have a meeting every month and you learn so much from this learning. So I request all new members, all the people who come to become a member of All India Kitchen Garden. I'm from All India Kitchen Garden Association. स्टार्टिंग मैंने किचन गार्डन 39 से की थी, यूनिट 39 से, और 5 इयर्स मुझे हो गए हैं। मैंने बेसिक ट्रेनिंग भी यहीं से ली है, और इला जी, हेमा जी, इनसे सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी मिश्रा सर, उनसे भी बहुत सीखा। मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, तो सेकंड प्राइज़ था मेरा किचन गार्डन का। आई लव ऑल वेजिटेबल्स लगाना, होम ग्रोन जितनी भी है। इट्स वेरी हेल्दी फॉर अस, और ऑर्गेनिक है, सबसे अच्छी बात यही है। और मैं ये बहुत ही डीप मतलब है, आप जितना सीखोगे उतना कम है। और मेरी तो प्रेरणा यहीं से ही सारी प्राप्त हुई है, सारी किचन गार्डन्स के लिए। फ्लावर्स के लिए मेरे बाद में मेरा हुआ है, पहले मैंने वेजिटेबल्स पर बहुत किया काम। I'm a new member. I joined the unit 42 in April this year. Actually, I was invited by a member. She told me you come over and as a guest. So when I listened to the various products that were on display and how you can preserve your kitchen garden, how to enhance it, so I thought of joining this place. So and after that I have attended various meetings, and every time I have gained in knowledge. As an amateur kitchen, I have a small garden of my own on my terrace. Taken some plants, and I have also put them in the various gamlas and all, but and they are thriving very well. So I think I have my plants are also growing, and I have also gained in knowledge. So that's the biggest takeaway from this membership that I have gained. Mrs. Indira Misra, first term master and former president of Ikebana International, gave a demo of freestyle Ikebana arrangements to the group of gardening enthusiasts. Indira Misra introduced this Japanese art form, which started by offering flowers to gods and slowly developed as a means of communication with flowers. For those interested in seeing and hearing the full demo, we are bringing out a separate video soon. I'm basically a home planter. This is my first attempt. I'm doing my plant show, and these are basically all homegrown plants, matured enough. I've fixed up my roots, soil, everything. They are repotted in the pots. I have bonsais over there. I have some indoor plants, repotted. Basically, I prefer plant in a small pot, ताकि flats. Basically, everybody is living in a flat these days, so it's easy to manage and all. Everybody doesn't have a garden कि बड़े pot में लगाओ. So small plants, I prefer that. That is my preference. I'm called Buddha.it. So we are into green gifting. We have corporate miniature gardens and plant from any range and any occasion. So basically we have bonsais, we have rain gardens, we have a lot of different variety you can see.
basically we are specialized in personalization. इस एसोसिएशन की बहुत पुरानी मेंबर हूँ और इस एसोसिएशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत सी नॉलेज अपने आप प्लांट्स को पॉटिंग रीपॉटिंग करते हुए खुद अपने आप बढ़ जाती है और इनसे मुझे इतना प्यार है प्लांट से कि मुझे सारा दिन मैं इनके साथ ही रहती हूँ और किसको क्या चाहिए वो खुद ही बताते हैं कि अब हमें धूप चाहिए या छाया चाहिए। तो अब मैंने बहुत वैरायटीज़ मैंने ग्रो करी हैं, जैसे पान के सैपलिंग्स है, बनारसी पान में ये कटिंग से लगाते हैं और ये बहुत टेस्टी है। और पान तो वैसे भी आप सब जानते हैं एपिटाइज़र है, आफ्टर फूड भी है पान। देन सेक्युलेंट्स है जो मैं ग्रो करती हूँ एंड देयर आर वाटर प्लांट्स है, वाटर प्लांट्स बहुत से ग्रो किए हैं। देन आई मेड दिस बैम्बू प्लांटर, ये बैम्बू के अंदर मैंने इसको एलोवेरा को ग्रो किया है एंड दिस इज़ नेचुरल स्क्रब। ये इससे इरिटेशन नहीं होती स्किन पे और इसे आप स्क्रब कर सकते हैं अपना नहाते टाइम। और प्लास्टिक और उससे तो बहुत हम लोग दूर रहते हैं। देन आई मेक वर्मी कंपोस्ट ऑल्सो, वर्मी कंपोस्ट ये नीचे है एंड दिस इज़ मेड फ्रॉम प्योर काउ डंग एंड बस यही सब है और जो मैं अपना मेरा मन भी लगता है और एनवायरनमेंट भी ग्रीन रहता है। ये मल्टीप्लाई हो जाता है एक डालने। सुंदर डिस्प्ले किया है ना, एक एक हॉल को देखने में मुझे 1-1 घंटा लग जाएगा। इतनी क्रिएटिव फॉर ऑल द मदर इन लॉ। वाओ, इट्स नॉट माइन। Of this wonderful organization called Kitchen Garden Unit 42, and people, it's like home away from home, and so much of warmth and so much of learning from each of them. They all are so experienced, and for me coming to this, it's like learning every day something new. Thank you. Please like and share the video. Write your comments in the comment box below.